Hi everyone. Today we are going to have a guest lecture for you all, and we have a speaker with us who does not belong to pharmacy, but he's here because of his experience in giving a lot of interviews. He's kind of mastered the art of giving interviews because he has given many of them, like around 30 to 40, as he tells me. So his name is Madhur Mishra, and he'll be talking to us about, how we should behave in an interview, how we should talk, and how we should, drive the interview towards cracking it and getting the offer letter in hand. So I would like to call upon Madhur. Please come on here with us on this platform with Pharma Daily, and just introduce yourself, and please go ahead. Hello, am I like visible and audible too? Yeah, you're visible. Yeah, you are And audible now. So hi yeah. all, I am Madhur and I am a computer engineer and I did my BTech from JP College, JIT Noida. And after that, I got placed in NCR Corporation. I worked about 1 year there. And after there I moved to Spinny and I'm currently working as software developer at Spinny. And yes, we'll see where this session goes. Yeah, I would really like to thank you, Madhur, for joining this call on a Saturday. Everyone from corporate knows what it means to take out time for kids and talking to them on Saturdays. So let's just quickly start. And as I've just already mentioned to these guys, that you have had lots and lots of interviews in your entire career till now. So I would just want you to start with how you used to start your interview. Like, of course, the first question is always, like you have to introduce yourself and all these things. So how did you go Mhm. about how did you give your first impression to the interviewer? So just brief us about that. Uh, Before that, I'll try to give some insight of how many interviews I have given till date. So why I am here, I'll say that first, then we'll start. So why I am here, like why I have given 40 plus interviews till date, is because I got rejected from many. Why I got rejected from many? There are lots of things. I was very unprepared for that, and gradually I started learning stuff that I was very weak at, and how I targeted those, and hence ending to succeed in interviews. So my past 10, 15 interviews are very good, and before that, their experiences are horrible. I got rejected from companies offering me 3 LPS to 30 LPS. Got rejected from first interview, that is resume shortlisting, till HR round. So there are lots of lots of struggles, but hopefully I'll be sharing what insights I know, what things I did so as to learn stuffs. Okay. So as you asked that, how I try to start my introduction. Okay. Yeah. So uh, it is a set pattern. It is a Hmm. free ball. What I say now, it is a free laddu that interviewer gives. Okay. It is set pattern. He'll always ask you, tell me about yourself. Yeah. Tell me Right. about yourself is, and this is why he wanted to say that, because he wanted you to be comfortable in interview. He Right. wanted you to say what you know, and telling about yourself is the easiest way that you can say na. Right. So Exactly. in that, what students did mistakes and what I used to do mistake is, I prepared my intro like a speech Hmm. like, hi ma'am, good morning ma'am, uh, I am from this college, my strengths are, my weaknesses are. This is very bad practice. And my Hmm. first interview was with TCS Okay. profile, at Hmm. Ninja profile, and I was blank for about 30 plus seconds on Okay. this question, the first question, tell me about yourself. I was blank. Why? Okay. Because I mugged up that sentence. You need not to रटना नहीं है उस चीज को. You should Right. be knowing what to say. You should have a pattern. So what I created now, I have seen, I thought ki we have our resume in front of us now, Right. and basically what what am I is written on my resume. So Right. I should refer that. So what I did is, we write hobbies in our resume, we write technical stuffs, 10, 12th and college.
So Right. how I used to start is कि I have done my 10th from Shajapur, and my hobbies. So I have learned what all my hobbies are, like playing tabla, etc. till 10. So you have introduced like where are you from, and what are your hobbies are covered. Now directly jump to the college part, and during college part always try to say technical skills you want to show. Always try to mention what technical skills you know, so that interviewer has a point to ask you about. Don't end Right. with my weaknesses are these. Interviewer can't do anything with that. You don't have second answer prepared after that answer. If you say Exactly. ki I enjoyed pharmacovigilance, Huh. so now it is human nature, that human tendency, that interviewer would ask that what is pharmacovigilance. एग्जैक्टली मैं भी यही बोलती हूँ कि लाइक जैसे ही आप अपना आंसर देके फिनिश करोगे वैसे ही इंटरव्यूअर आपके आंसर में से ही विल बी पिकिंग अ वर्ड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम देयर इटसेल्फ तो यू कैन गिव देम द हिंट कि आप आगे मुझसे ये सवाल पूछिए क्योंकि मुझे ये आता है Correct. तो हाँ, इट्स अ गुड वे या one राइट of my प्लीज seniors suggested me this ओके once, that always try to play with the mind of interviewer. ओके So I didn't understood that at that time, but while failing interviews, I got to know that this is a free ball. So I राइट should be pitching what all skills I know, and I wanted my interviewer to ask upon. So you राइट should be one step ahead of that. If you have pitched that I have studied pharmacovigilance, so he will be asking you pharmacovigilance, and राइट now the definition is handy with you. राइट And always keep use other technical terms in that definition, so that राइट interviewer will ask you the third question from that. राइट एग्जैक्टली So दैट इज द you will take about 15% or 30% of your interview, which would be very scheduled, or you know that this would be the questions being asked, and you are very confident. And if you start your interview with a confidence, so there are higher chances of you getting placed and speaking English very well in Okay. So, as future you interview. mentioned about confidence, Mother, you only told us that in your first interview, you were asked and you were blank for 30 seconds. So, you might have understood the fact that यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की 1-2% कमी रही या काफी कमी रही तो हाउ डिड हाँ, यू लाइक कैसे उसको बढ़ाया उस पर काम कैसे किया कुछ टेक्निक्स अपनाई कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्योंकि इवन व्हेन आई एम गिविंग माय इंटरव्यू समटाइम्स आई एम सो नर्वस आई हैव टू ईट एन ऑरेंज बाइट ऑन द साइड सो इट्स लाइक होता है सबका अपना अपना तरीका होता है somebody likes to have coffee somebody likes to eat something before after something like that so what are the fruitful techniques जो तुम्हारे काम आई what did you use to do uh, so I was very bad at English. I am still learning English, how to speak okay English. So okay I used to fear कि how I'll answer my questions in okay English, that two right technical questions. So right मैं prepare ही नहीं करता था, मैं dodge अच्छा करता था उस चीज को, उस condition को. okay okay Then I understood कि spoken English और English we speak in during interviews are हाँ very different thing. क्योंकि right exactly इंटरव्यू के टाइम हम टेक्निकल टर्म्स बोल रहे हैं, हाँ क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ हमारे पास है. सो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं और बहुत स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश आपको बोलनी है. आपके पास रैंडम नहीं है कि कोई भी आके पूछ ले टाइम क्या है, व्हाट इज द टाइम नाउ, तो आपको सोचना पड़ रहा है. 30% ऑफ इंटरव्यू वी ऑलरेडी न्यू कि यार यही पूछने वाला है इंटरव्यूअर. तो right उसकी इंग्लिश आपको प्रिपेयर करनी है. आपको कंप्लीट इंग्लिश बोलना नहीं आता आपको. ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे. आई एम सही स्टिल बात लर्निंग इंग्लिश, बट स्टिल आई मैनेज टू क्रैक. सो मैंने right क्या किया था कि अब जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल टर्म्स हुआ है, हाँ फार्माकोविजिलेंस हुआ. आपके तो फार्मा में तो बहुत सारे ड्रग्स भी है ना, बहुत सारे हाँ मेडिसिन बहुत के नाम है, वेरी वेरी हार्ड ना. सो right मैं क्या करता था कि मैंने उन टर्म्स को मगअप करना स्टार्ट किया, रिपीट करना अपने आप से बोलता था मैं उन टर्म्स को, या उनके आसपास के सेंटेंसेस बनाता था, अच्छा ताकि अगर मैं लो भी हूं ना, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, स्टिल मैं उन वर्ड्स में नहीं अटकूं. okay उनको मैंने इतना प्रैक्टिस किया कि मैं वो वर्ड्स तो मैं बोल दूंगा, अच्छा भले मैं उसके आसपास का आंसर नहीं बोल पाऊंगा, मतलब मैं वो वहां पे नहीं सारे अटकूंगा. वर्ड्स जो कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़े डिफिकल्ट हैं टफ है, या फिर टफ हैं बोलने में या आई गेट योर पॉइंट एंड मोस्टली यूज्ड है, कॉमनली यूज. जैसे मेरे इसमें हम डेटा हो गया, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑल दिस टेक्निकल स्टफ्स, ये हमारा कोर है.
वैसे फार्मा के भी कुछ कोर होगा जो यूज ही होगा। राइट, मतलब ऐसे कुछ इनएविटेबल टर्म्स जिनके जिक्र के बिना आपका इंटरव्यू पूरा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। सो राइट। उनके आसपास के आप जितने भी डिफरेंट पॉसिबल सेंटेंसेस बना सकते हो इंग्लिश में, हाँ। वो बनाओ। और वो 100% हेल्प करते हैं, मुझे बहुत हेल्प किया उन्होंने। फिर इंग्लिश फिर बोलना भी स्टार्ट ही करना है ऑब्वियसली। हाँ, ऑफ सो कोर्स, या। उसमें मैंने क्या किया था ना कि आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विथ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड इन इंग्लिश। अच्छा, ओके। सो हाँ, so I used to, because friends don't judge. राइट, Personally, राइट। why don't we start communicating in English? Because we have fear that somebody would laugh at me. कि यार मैं राइट, 1 मिनट तक अटका रह गया तो लोग क्या सोचेंगे। सही बात बट है। ये तो हम स्टार्ट करें ना, इंग्लिश इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं। तो सही बात है। हिंदी भी हम बचपन से तो फ्लुएंट बोल नहीं रहे। सो हम इंग्लिश के परस्पेक्टिव में हमें बच्चे ही हैं। सो राइट। गलती कर सकते हैं, तो ऑलवेज चूज वन ऑफ योर फ्रेंड। और what I used to do now before starting conversing with my friends in English, I used to uh, get in a like completely empty room, vacant room, and I used to speak in English about what I have did in the complete day. That I have wake up early in the morning, I did brush, I ate breakfast, so nobody is going to judge me, and I am starting to speak in English, because speaking English and writing English are different. I राइट, was always very good at राइटिंग। studies. So I राइट, used to write good answers, but I was not able to speak in English because I didn't practice speaking in English. I always had words in my mind, but I was unable to speak it loudly. So for that, there is only single way. You have to start speaking in English. अटको, तो सेइंग कि खूब अटको, खूब बोलो, ऐसा। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। हाँ। सो एज यू सेइंग कि ये इंग्लिश जो है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो वी कैन जस्टिफाई इट बाय, हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को बहुत क्रिप करते हैं कि इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, या तो हम अटेम्प्ट ही ना करें। व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, होता है ना, जब अपन स्कूल में या कॉलेज में वाइवास भी देते थे, तो इट हैपेंड कि हम लोग चुप रह जाते थे, एंड वी यूज्ड टू थिंक कि चुप रहेंगे तो अल्टीमेटली द क्वेश्चन विल go to somebody else, और क्या होगा कि सामने वाला अगला क्वेश्चन पूछ लेगा। सो दैट इज नॉट द सोल्यूशन, स्पेशली इन द केस ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि दैट बिकम्स अ वेरी इरिटेटिंग पार्ट फॉर द इंटरव्यूअर, बिकॉज ही हैज टेकन आउट टाइम of his day and he is taking your interview. So we should kind of respect that person. And जैसा कि you are saying कि it's not our first language, so we don't have to crib on it, मतलब कि उसको लेके परेशान नहीं होना है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, जस्ट लाइक यू आर सेइंग, एंड you're giving us the techniques कि हम इसको कैसे possibly practice कर सकते हैं. So that's a really good thing. Anything else that you worked on for your confidence, or like you are saying कि कुछ ऐसे inevitable questions हैं जिनके बिना आपका इंटरव्यू नहीं जा सकता, खत्म नहीं हो सकता, उसको गुजरने के लिए उससे you have to go through those points. तो ऐसी कोई चीजें जिनके लिए कोई टेम्पलेट्स हो या कोई टेक्निक्स हो क्रैक करने के लिए, वो चीजें, something that you did. जैसे there are two questions that are inevitable in an interview. Right. First is tell me about yourself. So हाँ, tell me about yourself is the basic template है कि start with 10th 12th, your right, college, and college should be like you should be describing about your skills that you have learned during college, because at right, the end interviewer would ask you questions related to skills. right, Okay, so skill को बीच में pitch in करना जरूरी है। right. टेल मी अबाउट योरसेल्फ प्लस कॉलेज में, सो दैट यू आर वन वे अहेड। और एक और फ्री बॉल जो होती है, फ्री हिट होती है, वो होती है कि इफ इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू आस्क मी एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू। Yeah, एवरी at the इंटरव्यूअर end. आस्क, Yeah. हाँ, कि हाउ वाज योर इंटरव्यू, व्हाट आर योर फीडबैक्स, और डू यू वांट टू गेट एनी फीडबैक्स, ऐसे कुछ कुछ पूछते हैं वो। तो उसका भी एक टेम्पलेट बना लो ना, तो वो यूज हो ही जाता है। Right. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू ना ड्यूरिंग दैट, so I have heard many of my fresher colleagues what they used to answer. So they used to ask ki, how this company is going, what are its number, what is my job security. So all these questions are irrelevant for fresher, because हमारा भी पार्ट है जॉब लेना, ना कि कितनी स्टेबिलिटी है देखना। Right. सो मैं उसको हमेशा इस तरह फ्रेम करता था कि ऐसा भी लगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट जॉब, Right. एंड आई एम अ बिट क्रिएटिव एज वेल, और उनके दिमाग में एक मेरी अलग इमेज रह जाए कि हाँ यार, ये था जिसने कुछ और पूछा मुझसे।
For Okay. example, in one interview I asked ki, how far do you live from college, from company where Okay. I was applying. So this indirectly show that I am planning to move there. I am Right. ready in settling there and ready to commute. So I am Right. asking about the problems he face. Exactly. And so he started saying that I used to live with my classmate, and he used to. Uh, I think your camera got stuck. Okay, Yeah, now you're let back. me check my interview. Please continue. So where were we? You was He said that what one of my colleague used to travel with bicycle, and I owned a bike, and I used to go with bike. So he was happy. At the end, I asked something that is relevant, also not such a bizarre thing I have asked, but okay. not that which doesn't suit my profile. I am fresher. I should not be asking about money a company is making. If I have a job, obviously it's my right. If I don't have a job, it's Okay. my first responsibility is to get a job. So you should ask question that suits that. Don't So ask ki, exactly मेरे साथ यही हुआ था, when I was in my Wipro interview, and at the end they told me कि okay, now your interview is finished, this is the last round, so do you want to ask anything to us? And I was literally not prepared for that question, and मुझे उसके लिए डांट भी पड़ी थी जो मैंने पूछा था, and वो इतना spontaneous था ना, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, you're answering everything, आप बात भी कर रहे हो, आप एचआर वाला इंटरव्यू भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट लास्ट में यू कैन नॉट स्क्रू अप. एंड आई डिड दैट. व्हाट आई डिड वाज कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि मैं क्या पूछूं उनसे. तो मैंने बोला कि yeah, I want to ask that if I get selected, then when will be the joining? So it was a sense of telling them that yeah, I want to join. But since that was a technical interview, तो उस इंसान का काम hmm, था सिर्फ मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना. अगर मैं ये चीज एचआर से पूछती तो शायद मुझे डांटनी पड़ती. एंड द लेडी स्ट्रेट अवे सेड टू मी कि इज दिस द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग मी. वो रील आता है ना, या मीम आता है ना, जिसमें पूछते ये hmm, जगह है ये सवाल पूछने का. तो मेरे साथ ये हुआ था वहां पे. सो वी रियली नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. इनफैक्ट when we were talking last night about this call, about what we want to discuss, तब मैंने ये चीज तुमसे सीखी that wow, this is the way we should talk to them. And maybe I'm going to use these things in my next interview whenever I'll be asked. So thank you for this technique also. we friends And used to say this is a free ka laddu hai ye हाँ, मिलेगा. ये तो होता ही ऐसा. है, इसके बिना बच नहीं सकते. एग्जैक्टली exactly. हाँ. सही बात है ये. Right. So, tell me about the things that the rejection part, like you said, you have faced and seen many rejections, and क्योंकि obviously कोई एक rejection देख के भी human nature है. And as a B Tech student या B Farm student for now, क्योंकि आज हमारे साथ B Farm students है, anybody who has done his or her graduation, उसका नर्वस हो जाना, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाना, उसका थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन स्टार्ट होना बहुत ही कॉमन बात है. तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट पार्ट? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन. Hmm. Uh, that was a phase. It gradually, like, I overcome that phase. So initially I used to in my few initial rejections I used to think, yeah, why I am failing, why I am getting rejected. Then gradually it became my habit कि यार okay ठीक है, एक interview है ना. At the end there are lots of companies. You should, after getting rejected, you should not think यार ये place हो गया. हाँ. You should be thinking कि मैं क्यों place नहीं हुआ, because current situation is I am not placed, I am unplaced, and I have to give another interview, so I have to be one step ahead from where I am currently. So Exactly. you should be thinking about your failures, what mistake you did, and prepare that. And Right. one more thing, luck is always there. Right. Some day you don't have your day, you answer everything correctly, but still you don't get placed. It's very normal, and it's very normal. Like, my roommate got placed in the first interview he cracked, he sat on. Okay. So he was free for 2 semester, and I was unplaced from campus till date. Right. So it is everyone's journey. He was very well prepared, and I got myself prepared during my journey. It's your journey, just back it up, and
know your failing points and try to rectify those. Right. uh, and Okay. don't stop giving interviews first of all. That is a very I was in love with TCS Digital. आई right. थॉट कि मुझे से डिजिटल मिल गया और मैंने बंद कर दी. मैं रेज्यूमे साइड में पटकूंगा, लैपटॉप बंद करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा. This is Right. what I was planning. Mm-hmm. And the rejection from Tata Digital was the hardest for me. I Okay. got rejected midnight, 10:30 or 11, and I was in Greater Noida. So I, I I took the last metro. If I was late 5 minutes more, then I was unable to reach my campus as well. So होता है कई बार कि आप बहुत मेहनत करते हो किसी चीज के लिए बट नहीं होता. एंड इट इज नॉर्मल, हर कोई प्लेस नहीं हो सकता. बट द ट्रूथ इज दैट देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज. मैंने फार्मा का भी सर्च किया, फार्मा के भी एमएनसीज ही अगर देंगे तो 40+ एमएनसीज तो हैं. तो Definitely है. आराम से हैं. तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे. ट्राई टू crack the first interview sits on, but don't get depressed if you are getting rejected. Uh, just figure out your failing points and improve that. Right. That's it. That was very insightful, Madhur. So you telling me that you had your last, you traveled by the last metro that day on your rejection day of thesis. So it reminds me of I have had a chance to go to Noida and give the interviews for pharmacovigilance and different companies. So from Wipro, मुझे बुलाया गया था. Reporting time for the interview was 8 a.m. in the morning, and मेरा interview start हुआ था 7 p.m. in the evening. एंड इट वॉज Mm, ड्रेडफुल टू वेट देयर फॉर सो मेनी आवर्स. मेरे आसपास बैठे सारे बच्चे अंदर जाते, इंटरव्यू देते, बाहर आते एंड घर जा रहे थे वो लोग. Okay, they were mm, from Delhi, Noida, and other places, NCR. Somebody from Ghaziabad, somebody from Faridabad College, and mm. all kinds of students were there. But I was sitting there from morning to evening, and मुझे कॉल नहीं आ रहा था कि अब आप आ जाइए आपका इंटरव्यू. I could not get that to see for like 8 to 9, around 12 hours, almost 11 hours. So it was so difficult. And then also I have also seen कि कई बार ऐसा होता है कि आपको बुलाते हैं एक टाइम पे, but they don't take the interview and they say कि आज नहीं होगा कल होगा. और ऐसे भी कई चांसेस आते हैं जहाँ पे आप एक बहुत बहुत अच्छे पैकेज वाली कंपनी से रिजेक्ट हो जाते हो, लेकिन आपके पास ऑफर होता है किसी ऐसी जगह का जहां या तो आपकी पसंद की लोकेशन नहीं मिल रही होती है, या फिर द पैकेज इज टू लो. So, or otherwise they grill you in the interview by testing your Mm, patience, by mm. testing, by dragging you via time, right? Time limits. So what's your say in this ki how to tackle these things? What you have mentioned that sometimes you don't have that great package. Like, Right. Yeah. I think you're stuck again. hello, Yeah. am I Yeah, audible you're now? back. Yeah, you're Okay, back. okay, Yeah, please continue. okay. So I was saying that sometimes you have to settle Right. to the company you are not expecting, or if you know that यार I am तो इस स्टूडेंट से बहुत अच्छा. हाँ, ये भी बहुत बड़ा point है. We'll have to talk about this also. I think you're stuck again, Madhu. Okay, he will be back. No problem. Hello. Yeah. Hi. Okay, So no sorry problem. guys, my No, it's internet. okay. Absolutely okay. हाँ, हाँ. Yeah. So where were we? हाँ, I was You saying said that कि कई बार sometimes we have to दूसरे हाँ settle बच्चे से करना पड़ता. compare करते हैं. We will discuss this separately. हाँ, very good point to talk about. Yeah. So yeah, we were talking about the time lapses and grilling of the interviews and बड़ा छोटा कम या location अच्छी बुरी वाली जो situations आती है ना, you have to choose first, you have to settle for something lower than what you have thought about yourself. हम्म, कि हम सोचते हैं मैं तो हम्म. ये deserve करता हूँ और वो मिलता नहीं है, तो how to deal with that thing. So yeah. Uh, on that ना my mother used to say कि Mm-hmm. बेकार से बेगार भले. You Right. don't have like it's better to gain experience than Right. money. If you don't have anything, Mm-hmm. start gaining experience. Experience Right. would give you money indirectly or in Right. future.
So don't stop or don't lose hope and start like, yeah, I want to switch my profile now. I have seen many of the students राइट that फार्मा में भी comes ऐसा like, हाँ कि वो इससे आए और क्योंकि प्लेस नहीं हो पा रहे थे इसलिए चले गए. सो एग्जैक्टली आप जिस फील्ड में उतरे हो एटलीस्ट उसमें अपना बेस्ट शॉट देके जाना चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील. बिल्कुल और ट्राई करो, मतलब खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम कर रहे हो. फ्री में हो रहा है कोई बात नहीं, ग्रिल कर रहे हो, आज का फेज है ग्रिल होना. I have few of my friends that they were very sharp than me, and they deserve way greater package than me that I used to earn. But they settled. Those were not their days. They settled to lower packages, and now they are earning more than me. So you get chance to prove yourself. Sometimes you don't have your day. Uh, Rather than sitting vacant, like with doing nothing at your home, you should opt for any placement. You should start your journey at least. This is राइट what I feel. exactly yeah so as I already told you I want to talk separately about this thing कि कई बार ऐसा होता है क्लास में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं in the 4 years of our you know technical degree we might stand in the top 5 students जो we can talk about CGPA or any extracurricular activity we are very famous in the college and बहुत सारी चीजें होती हैं है ना हो सकता है कि वी आर इन द टॉप मोस्ट ग्रिड इन द कॉलेज लाइफ बट जब यू नो प्लेसमेंट्स का टाइम आता है तब ऐसा Hmm. होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी बात भी नहीं करी किसी से जो सबसे इंट्रोवर्ट है या जो कम बोलता है या फिर जिसने कभी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया ऑल द 4 years वो हमसे पहले प्लेस हो जाता है या फिर हमसे ज्यादा पैकेज पे प्लेस हो जाता है सो यू नो फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है जिन्होंने बहुत मेहनत करी है या जो दिन रात प्रैक्टिस करते रहते हैं उनका भी कभी कभी नहीं चलता है सिक्का नहीं चलता किसी किसी दिन होता है लाइक जस्ट लाइक यू सेड दैट इट्स अ लक फैक्टर टू बट यू नो that sad feeling or that depressing feeling that comes when we are trying to compare ourselves with a totally different person या फिर हम जज करने लगते हैं खुद को on the basis of other success वो हम देख नहीं Hmm. पाते हैं we feel jealous and all different kinds of human feelings after all Hmm. we are a human body तो उससे कैसे डील करना चाहिए what's your perspective on that how do you cope up with that I anything in used to get particular jealous. right Huh? exactly yeah I used मेरे to साथ get भी ऐसा jealous. I'm right still jealous. But अब mm-hmm. मैं उस jealousy को वो ऊपर क्यों है उस एंगल से नहीं देखता. मैं देखता हूँ okay कि मैं नीचे क्यों हूँ. right exactly कि that's the best उन्होंने किस तरह आंसर अच्छा कर सकते हैं. What all, मतलब उनकी ज्यादा अच्छी बातें क्या हैं. exactly ऐसा नहीं है कि आप अच्छे सीजीपीए वाले थे या बहुत एक्सट्रोवर्ट थे तो यू शुड ऑलवेज बी ऑन टॉप. right हमेशा लोग होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं या उनके पास कुछ और स्किल्स हैं जो आपके पास है ही नहीं. तो यू शुड ऑलवेज सी दैट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर सेल्फ. दिस इज हाउ यू विल ग्रो. अदरवाइज everyone is growing. I see in my industry I see switches daily, and daily people are uh, getting more and more package. So hmm. jealousy is by default, but you have to see from yourselves कि यार right मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ कि मुझे exactly इतना नहीं मिल रहा या मैं इतना नहीं जा पा रहा. ऐसा देख लो. बाकी बुरा तो लगता है. ऑफ कोर्स ये तो पॉइंट उससे है. डील करते हुए लेकिन हमें हमारे इंटरव्यूज नहीं बिगाड़ने हैं या फिर हमको हाँ. फील्ड स्विच करके भाग नहीं जाना है ये सोच के कि ये फील्ड है ही नहीं मुझे इसमें आना नहीं चाहिए था या फिर दिस इज नॉट माय थिंग माय कप ऑफ टी इट्स नॉट लाइक दैट इट्स नेवर लाइक दैट इट्स लाइक देयर आर नंबर ऑफ हाँ. कंपनीज कीप अप्लाइंग keep doing self analysis and talking about self analysis so these many rejections might have led you doing a lot of self analysis so you might have updated your cv many times you might have updated your skills many times so how did you go about in those things document wise and all those things how do you used to arrange Hmm. things do Hmm. on that please tell us that Because I got rejected from resume rounds also so many times. So okay what I saw is na ki your resume should also stand out. right And what is the highlight of your resume is your mm-hmm. skill, because at the end you are getting hired from skill.
Skill, Resume right. doesn't show your communication skills or hobbies, nothing. It shows your skills. So always try to mention your skills very clearly, very neatly, and it should be the first thing that a interviewer would read or an HR would read, because generally resume Definitely. shortlistings HR does. So it Right. should be neat and clear. It should not be कि यार इसने ब्लू कलर की प्रिंटिंग है तो मे बी कलर्ड प्रिंट आउट नहीं होता, मेरा रेज्यूमे ब्लैक एंड व्हाइट है. सो Okay. उसका कुछ नहीं होता. कलर आप रख सकते हो. आपका Yeah. आपके सेक्टर में क्या चल रहा है, जैसे मेरे सेक्टर में टेक्निकल आपकी स्किल्स ही मैटर करती है, तो हम इतना कलरफुल नहीं बनाते हैं. बहुत सारे होते हैं जैसे नॉन टेक प्रोफाइल्स हैं, दे हाँ. यूज टू, उन्हें चाहिए कि कलरफुल हो, कुछ Right. वाइब्स हो, आपका आपके Right. बारे में कह रहा हो रेज्यूमे. तो अगर वो है तो आप कलरफुल बनाइए. Right. बट जैसा भी बनाइए, अपना जो मेन स्किल्स हैं जो आप दिखाना चाहते हो वो दिखो. अगर Mm-hmm. आप 8.5 प्लस सीजीपीए होल्डर हो, 9 Right. प्लस सीजीपीए होल्डर हो, और आपने कॉलेज में बहुत अच्छा को करिकुलर एक्टिविटीज की है, आप चाहते हो कि ये दिखाएं, तो आप उसको दिखाओ. मेक श्योर कि वो देखें और वो ऊपर रहें. Right. कम से कम झूठ बोलो रेज्यूमे में, Mm-hmm. और ट्राई टू बी प्रोफेशनल. ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी ईमेल आईडी यो यो मधुर सिंह रख रखी है. Okay. ये बहुत फूलिश होता है और बहुत सारे बच्चे करते हैं. हाँ. फंकी नहीं करना आपको. आपको इंस्टाग्राम नहीं बनाना रेज्यूमे को. इट Right. शुड बी इट शुड बी फॉर्मल. एक नई जीमेल आईडी बनाओ अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि ये मेरी अच्छी नहीं है. Right. हमेशा मधुर मिश्रा, आपके डेट ऑफ बर्थ या कुछ नंबर, अगर नहीं मिल रहा है तो अदरवाइज Right. नॉर्मल लो. फॉर्मल रखो चीजों को. Right. फॉर्मल नाम रखना है ज्यादा. अगर आप फोटो भी अपनी लगा रहे हो तो सेल्फी ज्यादा मत लगाओ. ट्राई टू बी फॉर्मल, है ना. तो वैसा रखना चाहिए. और ट्राई टू बी योर सेल्फ. किसी को कॉपी पेस्ट मत करो. मैंने बहुत सारे रेज्यूमे देखे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी लिख रखी है अपने इसमें. इट इज Okay. यू. तो ये काफी आई कैचिंग चीज है. Oh my हाँ God. ये बहुत This हाँ is ये बहुत something अच्छी चीज really है. new to me also. Great. हाँ. ये आप हो तो आप बोलो. और आप यूनिक हो ना, तभी आप अलग हटोगे 100 में से. तो जो Same. आप हो वो बनाओ. इफ यू लाइक गार्डनिंग तो राइट गार्डनिंग. इफ यू लाइक जॉगिंग, राइट जॉगिंग. बट बी योर सेल्फ. डोंट टेल लाइज इन रेज्यूमे. अगर Right. रेज्यूमे भरना है झूठ बोल के, तो झूठ को नीचे रखो. जितना सच ऊपर रखोगे उतना अच्छा है. और हाईलाइट रखो सच सच को. और Right. फॉर्मल रहो. ये भी एक फॉर्मल नहीं लेते. मैंने बहुत सारे रिज्यूमे देखता हूँ, मैं रेफर करता हूँ ना, सो मैं Mm-hmm. डायरेक्ट रिजेक्ट करता हूँ. अगर मैं कोई टेढ़ी मेढ़ी ईमेल देखता हूँ ना, सो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ. Right. होता है. या Of मैं course. कुछ फंकी से वो फोटो देखता हूँ उस पे, तो आई रिजेक्ट रेज्यूमे ऑल टुगेदर. Right. सो इट इज अ And साइकोलॉजी कि यार इफ especially, ही इज नॉट सीरियस, ही इज नॉट सीरियस, इट शोज दैट. right, exactly. And सामने वाला वैसे भी आपको जज करने के लिए आया है. We should have हाँ that वो आपको. mindset in our head. बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए हमको ये बात कि जो इंटरव्यूअर है वो हमारा दोस्त नहीं है. वो हमको जॉब देगा, वो हमको पे रोल पे रखने वाला है. तो वो चाहेगा कि मैं बेस्ट पर्सन को हायर करूं जो मुझे इतने पेरोल का बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सके, बेस्ट आउटपुट दे सके, 100 क्या 120% दे सके उसका. So that person is definitely going to judge you. Not only judge you, first he'll judge you, then he'll sit with your resume with 1,000 other resumes, and then he will scan कि इसमें से better कौन था. So that's a very big, catch here कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है that we are not supposed to ask or think of that person as our friend. जब हम मिले तो not start with them like a friend and all. So that's important. And हाँ then seriousness दैट इज. दिखाना बहुत important है, like you said. So you mentioned about vibe. So I want to say कि like you're saying कि be yourself. So ऐसा कई बार होता है ना कि हम कोई भी बात जो suppose for example like an HR question is HR round is going on, तो HR आपसे टेक्निकल बातें तो बिल्कुल नहीं करेगा. HR हमेशा रिवर्स साइकोलॉजिकली ही क्वेश्चन पूछता है. मतलब ये पुराना टेक्निक हो गया जहां वो पूछते थे कि व्हाट वाज योर हॉबी, व्हाट वाज योर फेवरेट स्पोर्ट, हु इज योर फेवरेट सिंगर. ये सीधे क्वेश्चंस अब बंद हो चुके हैं. ऐसे क्वेश्चंस अब कोई नहीं पूछता. इट इज मोर लाइक इट इज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन जो कि आपको ग्रिल करने के लिए बना हुआ है, या फिर आपके दिमाग की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए बना हुआ है. ऐसा क्वेश्चन देंगे वो आपको जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये पूछ लेगा. एंड देन दे वांट यू टू आंसर. तो हाउ डू यू डील विद दैट? डू यू वांट टू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? लाइक टेल, I, लाइक यू I, से I, सेल्फ बी योरसेल्फ, I, तो कैसे बी हाँ, योरसेल्फ? I have very funny story on this प्लीज. topic.
Mm-hmm. So I used to get, as I said, na, कि I got rejected from HR round also. हाँ. So at one point ना I thought कि अब जो भी आंसर करूंगा जो मैं हूँ खुद मैं वैसे ही आंसर करूंगा. अपना फॉर्मलनेस तो मेंटेन रखना चाहिए आपको इंटरव्यू में, बट फिर भी जो मेरे अंदर से आएगा थॉट मैं वो बोलूंगा. आई वोंट हम्म. फिल्टर माई सेल्फ. सो हाँ. ये मुझे हेल्प कब किया ना कि द फर्स्ट कंपनी आई गॉट प्लेस्ड इज एनसीआर कॉर्पोरेशन. इट इज वेरी बिग एमएनसी एंड इट Mm-hmm. टेक इंटरव्यू लाइक एमएनसी. तो Right. एमएनसी के इंटरव्यू काफी ऐसे होते हैं कि टेक्निकल स्टफ पूछेंगे, Of बट course. दे वांट कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो और Right. आपके पास दूसरों से कुछ अलग हो, आपने कुछ एक्स्ट्रा भी किया हो. So Definitely. I remember my last round, my last HR round, HR plus many other round. I guess Okay. 4 5 panelists were sitting in that interview. So they said that ki Madhur, stand up for 1 minute and speak continuously for 1 minute whatever you want to say. You can say, and I have never did that because it is like a speech. It Bawa is re kind of babu. a speech. 1 minute हाँ non. और Okay. हाँ, and I was not prepared for that. Of course. So and he gave me 10 seconds कि think whatever topic you want to say. And he especially mentioned that don't say any technical topics. You have to say anything other than anything other than technical topics. Okay. So at that So point, what I did was you? recalling during that 10 seconds, na, I was thinking I have to be myself. That's it. Right. What I have been this 20 plus years, I have to say that. So I have started with being ambidextrous because I am an ambidextrous, kind of ambidextrous. So I started from there. So it gave me lots of things because I have introduced tabla in between. Cricket I used to play right hand batting, left hand bowling, and what issues ambidextrous face. So it was completely out of the box and helpful for me as well because I was living this life till my birth. So from my birth, so I was very confident, and I said that, and they loved me. After that, they also said that play something on table. So I played tabla Okay. also there. So it was very fun. HR rounds are always kind of fun. They wanted to see other part of yourself. या Hmm. क्या क्रिएटिव पार्ट है आपका. Exactly. क्रिएटिव भी नहीं बोलेंगे तो हम क्रिएटिव बोल सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल क्या आप और भी कुछ हो, आप वो बोलो. बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, और चीजें आएंगी दिमाग में, आती हैं इंटरव्यू के दिन. बहुत सारी चीजें आती हैं जो Right. आप सोच ही नहीं सकते कि मैं आंसर करता हूँ. मैंने कुछ कुछ ऐसे आंसर किए हैं जो जो मैं कभी नहीं कर पाता, वो मैंने इंटरव्यूज में किए हैं. Right. सो So this हाँ. tabla baja ke dikhao wala point is another key, which is wanting me to drag to another thing. कि अगर हमने बोल दिया है कि आई डू हम्म. दिस थिंग या आई एम गुड एट दिस थिंग, तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि झूठ तो मिनिमम बोले. पहली बात, रेज्यूमे में लिख भी दिया है तो भी बोलते टाइम एटलीस्ट हम वो चीज ना बोले जो कभी नहीं की है, क्योंकि यू कैन सी हम्म. हियर उसको बोल दिया कि बजा के दिखाओ तबला ऑन द टेबल इटसेल्फ. तो ऐसा कई बार होता है कि आपके साथ भी रोडीज खेल दिया जाए. वो बोल सकते हैं कि अच्छा चलो गाना आता है गा के बताओ, अच्छा डांस आता है चलो 2 स्टेप करके दिखाओ. तो डोंट फेक कि मैं भरतनाट्यम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क जो तुम वहां करके ना दिखा पाओ. इट इज लाइक वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. दे कैन इवन आस्क यू कि ये फायरलेस कुकिंग करके बताओ, ये रहा ब्रेड और ये रहा जैम, और जस्ट डू समथिंग फॉर मी. दे यू कैन नॉट थिंक ऑफ द इंटरव्यूअर्स माइंड कि वो तुमको क्या बोल देगा करने के लिए. तो ऐसा मत सोचो कि कुकिंग लिखा है तो यार ये थोड़ी ना करवा लेगा. देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फायरलेस कुकिंग. तो वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं. वो आपसे बोल सकते हैं कि आप हमको एक कच्चा सैंडविच बना के खिलाओ. तो बी प्रिपेयर्ड कि जो बोल रहे हो वो सच होना चाहिए. एंड एंड इफ इट इज ट्रू देन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली बी टेकन. वो आपको रख ही लेंगे क्योंकि एक तो आपने बोला एंड देन आपने प्रूफ भी कर दिया. सो दिस वहीं के वहीं इट हैज बीन प्रूवन दैट यू आर नॉट लाइंग. एंड दैट इज व्हाट दे आर टेस्टिंग, कि यहाँ पे कितना झूठ बोला जा रहा है और कितना सच बोला जा रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. So that's it. I think we have covered a lot of things. So, Madhur, any last or any second last things that you have on your mind that you want to discuss, or any free hits you want to give these kids? Ki guys, ये follow करोगे तो शायद ये मेरा mantra है. Like today's topic or today's discussion center is the art of cracking interviews. So, what's your mantra? हम्म. Last mantra? What do you want to say?
uh, my mantra is ki I always be very free during interviews. uh, I'll get bit technical. Like we open lots of apps in our mobile na. So Right. in the recent tabs we can see many of the apps open. So Right. that is RAM. So think your brain is a RAM. The more parallel processes you have in your brain, the slower individual processes would become. So be free, focus on only one thing, don't overthink during interviews. If one of your round is bad, just come over it and take other interview as fresh as you can. So ये मेरा मंत्र है. और हाँ, मैं इंटरव्यू के पहले हमेशा सोता हूँ. आई डोंट स्टडी एनीथिंग. इंटरव्यू के दिन मैं मोबाइल में मेरे से कोई बच्चा आके बताता था कि यार मेरे से ये पूछा, आई डोंट गो एंड स्टडी दैट. मैंने जो एक रात पहले तक पढ़ा है मैं उसको बैक करता था. हाँ. और बिकॉज आई यूज टू डू दैट, और उससे मैं बहुत कंफ्यूज रहा, तो जो मुझे खुद का आंसर पता था मैं वो भी नहीं कर पाया. तो ये मेरा पर्सनल मंत्र था. बहुत सारे लोग इंटरव्यू के दिन बहुत फास्ट प्रोसेस कर रहे होते हैं. सो Okay. उनको जो मिलता है, जो उनको कोई बोल के आता है, वो पढ़ लेते हैं और बता भी देते हैं. Okay. सो आई हैव सीन दोज ऑल्सो. सो बैक योर सेल्फ. मेरे को फ्री माइंड, खाली दिमाग पसंद था, तो मैं खाली दिमाग से सोकर जाता था. और सबसे कम डिस्ट्रैक्शन रखता था. ट्राई टू बी Okay. फनी ड्यूरिंग बाहर आउटसाइड इंटरव्यू. यार अपना काम कर रहे हैं, कुछ खाना है खा लिया, सोना है सो लिया. Okay. दैट्स इट. हाँ. Okay. और वन मोर थिंग कि यार फेक नहीं Yeah, करना, yeah. वो बात सच है. क्या नहीं आपने करना एक भी चीज फेक नहीं करना. राइट. जो झूठ लिखा है ना, आपका एक भी झूठ आपने बोला कि आई एम गुड एट दिस स्किल, उसने बोला प्रूव मी, एंड इफ यू आर अनेबल टू प्रूव देन यू आर रिजेक्टेड. यू देन आर एंड देन. कंप्लीटली रिजेक्टेड. तो बिल्कुल. फिर कोई आपको नहीं बता सकता. झूठ नहीं बोलना. झूठ मत बिल्कुल. बोलो, और स्पेशली कूल आपकी रहो. फेवरेट कंपनी हो तो बिल्कुल ही ऐसा मत करो. बिल्कुल भी नहीं करना. राइट. राइट. Right. Okay, okay. So yeah, great talking to you, Madhur, and I have learned a lot of things. Especially like I told you कि मुझे भी समझ नहीं आता है वो फ्री हिट वाले क्वेश्चन में, जब वो पूछते हैं कि क्वेश्चन में डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो क्या बोलना होता है. तो थैंक यू फॉर दैट. आई गॉट अ लर्निंग माई सेल्फ. एंड आई फील कि द फार्मा डेली स्टूडेंट्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज बात करके, बात सुन के. नाउ लेट्स गिव देम अ चांस टू इंटरेक्ट विथ यू पर्सनली. अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो गाइज यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा, say hi to Madhur, and talk to him. Whatever you feel like, you can go ahead. Good evening, sir. Call me Madhur. You can call me Madhur. You have to be professional. Now you will be joining companies. Call me Madhur. Yeah, in corporate you don't Sir, have to call ma'am and sir to anyone. Yeah, So you call me can call. Madhur and then go on asking question. Yeah. Madhur, you said that you don't speak in English. How do you improve your skills in English? Okay, so I think my internet is stuck again. Or am I audible? No, I'm no, audible you're now. audible. You're visible हाँ and you. हाँ Please go ahead. हाँ. So what I have already answered ना कि I have started speaking in English to myself. रोज बोलने की कोशिश करो. रोज धीरे धीरे बोलोगे ना, तो टेक्निकल इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट देन नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल. आप रोज बोलो, डोंट बी अफ्रेड. जैसे आपने अभी जो बोला है, आपने पहले सोचा ही होगा ना इंग्लिश का सेंटेंस, फिर आपने बोला. सो ऑलवेज ग्रैब सच सिचुएशंस. आपको मिल रहा है ना मौका, बोल दो. अच्छा है, आप एक स्टेप आगे ही हो. सो बहुत अच्छा है. हमेशा स्पीक अप और ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. डोंट हेजिटेट, नोबडी इज जजिंग यू. और घर पे खूब प्रैक्टिस करो खुद के साथ. कांच के सामने बहुत प्रैक्टिस करो. But actually, I know the answer very well, but I am not able to express input to someone. हाँ, दैट इज नॉर्मल ना. ये एक कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि तुम हिंदी में सोचती होगी बाय डिफॉल्ट आंसर, फिर हिंदी से ब्रेन इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, फिर इंग्लिश से आपको बोलना है, तो उसमें लैग होता है, तो उसकी वजह से आप अटकने लग जाते हो. सो ये तभी सही होगा जब आप इंग्लिश बहुत प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंट रहो. कई बार मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा, मेरे क्लासमेट्स को, जो बहुत अच्छे इंग्लिश में है बट दे आर नर्वस. तो आपको फिर वो नर्वसनेस हटानी पड़ेगी.
तो ट्राई टू गिव एज मेनी इंटरव्यूज एज यू कैन. आप वो करो, आप लोग आपस में मॉक इंटरव्यूज करा करो. मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत करता हूँ मॉक इंटरव्यूज. ट्राई टू टेक मॉक इंटरव्यूज. आपके आंसर से सामने वाला सीखेगा और आप सामने वाले के आंसर से आप सीखोगे. तो give mock interviews before appearing for the main interview. If Tata is your dream, so ensure that you give at least 3-4 interviews before going to Tata. Thank Is you. it like okay? Thank you. Anybody else, guys? Anybody else wants to talk or wants to ask something, can go ahead, or otherwise then we can wind up the call for today. Yes, ma'am. Good evening, sir. Hi, ma'am. You should call me Okay. Madhur. So my okay, sorry. So Madhur, what does the interviewer look for in a student so that he or she gets selected quickly? It is completely dependent on interviewer. First of all, point two: always go through JD, the job description company is saying, and try to learn the culture of the company, or see the company. Like Tata is very culture rich company. It's have people from south to like from everywhere. So try to understand that, try to grab that culture, then answer. uh, be yourself यार, हो जाएगा. और देते रहो इंटरव्यूज, जो मॉक इंटरव्यूज है ना वो देते रहो, होगा. Okay. हाँ. So my second question. So how can I handle it in front of interviewer? Practice is the only key. Practice plus skill. This is the only key. And once you overcome these now, so you will be very fluent. I have got blank in about 10 interviews, 10 plus interviews, because I was not aware. I have not prepared myself. Now I have shared some of things that I have used. So try to implement that. Try to speak very, very much in English, and try to, if you are already good in English, then try to enhance your skills, or try to say a definition differently. Like if you are sure that he will be asking pharmacovigilance, because I have written that in my resume, so उसकी 5 से 6 डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन खुद की बोलो, और खुद का आंसर. डोंट ट्राई टू मग अप एनीथिंग. रटना कुछ भी नहीं है, जो आ रहा है वो बोलो, और डरना नहीं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें स्टक कर रही हूँ, तो स्विच कर जाओ लैंग्वेज में. आइडियली आई डोंट सजेस्ट दैट. आपको हमेशा सर्वाइवर होना चाहिए, हमेशा मेहनत, मतलब हमेशा फाइट करने के लिए रेडी होना चाहिए. अगर आप अटक रहे हो ना, तो आप बोलो कि मैं अगले इंटरव्यू में नहीं अटकूंगी. और अगर आप स्किल्स में अटक रहे हो, तो ये इंश्योर करो कि यार मैं आज जिस डेफिनेशन में अटकी हूँ ना, वो आने वाले किसी भी इंटरव्यू में ना अटकूं. और ऐसे ही आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाओगे. Okay. Okay. Thank you. हाँ, वेलकम. Anybody else, Good evening, guys? Madhur. Yeah, welcome, Devendra. Yes, ma'am, I want to. Yeah, हेलो please go देवेंद्र. ahead. Okay, Please go ahead. Madhur, my question is that how to control emotion in front of an interview. Like you are seeing me, I have a smiley face and I go for the continuous smile on my face, and that's the reason I have schooled by my faculties also. So, how to come up with this? First of all, learn acting. Start learning acting. You need that. You have to fake your face, na. If your interviewer is 10 plus years elder than you, then you have to speak like that. You can't be that frank. And at the end, you are you. So back that also, but try to be bit formal. If there is a age gap, na, try to be formal. It's my advice. Try to be formal. Keep 30% of it with you. 70% should be formal. don't Yeah. don't hesitate, like don't mask your personality also, because it would be very difficult for you. If you are happy person, if you smile a lot, so you can't stop that, but you can pretend for 30-40 minutes at least, and then last Exactly. 20 minutes be yourself. If you have answered, अगर आपने बढ़िया फोड़ दिया है क्वेश्चंस में, बढ़िया खुश खुश रहो, हो जाओगे प्लीज.
हाँ, बट अगर इंटरव्यूअर सच में बहुत ज्यादा बड़ा है उम्र में, 20-25 हाँ साल एक्सपीरियंस वाला बंदा सामने बैठा है, एंड अगर वो बोले कि वाई आर यू लाफिंग या वाई आर यू स्माइलिंग, तो उसको ऐसा मत बोलना कि मेरा फेस ही ऐसा है या मेरा चेहरा ही ऐसा है. दैट विल इरिटेट हिम टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व. तो ऐसा नहीं करना है. टेल हिम इन अ पोलाइटर मैनर कि सर आई एम वेरी हैप्पी चीयरफुल पर्सन, मैं जनरली स्माइल करता हूँ, मैं जहां जाता हूँ सबको स्माइल करा देता हूँ, ऐसा बोल सकते हो. बट डोंट से कि मेरा चेहरा ही ऐसा है, तो यू नो दैट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. हाँ But things that हम्म Madhur is saying, you know, be formal in front of a senior who is really very experienced than you. So you have to mask a little bit. You have to mask this thing. You have to try and practice that. Yeah. Anything else? Thank you. welcome. Okay. So everyone is done with their questions. Are we good to go close the call? Okay, I think there are no more questions, Madhur. Thank you for all the time that you have spared for us and all the हाँ students for joining the session on a Saturday. And thank you for your insightful stories, your true stories. Nobody wants to, you know, share the failures and honest talks about rejections. कोई ये नहीं बताना चाहता है किसी को. So I'm sure ki the Pharma Daily students will definitely, listen what and follow the things that you have told them, and it will be really really fruitful for them. So thank you for making time for us. Thank you, Mother. Thank Close. you, Pharma Lady. Also, you Yeah. invited us. You invited me, and Okay. got gave me the chance to share my experience because I was very eager to share those experience because I don't want any other person to fail like me. uh, it is not failure. I was not prepared, so you should be one step ahead. So that's why I joined, and you gave me that opportunity. I'm very happy for that, and I enjoyed this session. And the students are also like already very good here. They are already asking very good questions, and they are well prepared. So Yeah. I want to see them in the story after getting placed. Yeah, yeah. It's been a week and they are working really hard. So fingers crossed. They are going to be placed soon, and we'll get a chance to showcase their victories. And about you, you'll be getting many chances to coming and interacting with our students again. So Sure, welcome sure. for future. And for today, Uh-huh. I'll say okay, bye. Okay, so goodbye Okay, everyone. Have a nice day. I close this call okay. now. Bye. Bye all. Bye bye.